बट जैसे ऐसा होता है ना कि एक साइड तो ये है कि मैं मेरी एम्बिशन के लिए भी आई एम वर्किंग, प्लस मैं साइड की चीज़ें भी देख रही हूँ, मैं फैमिली को भी टाइम दे रही हूँ, मैं और भी चीज़ें कर रही हूँ, और उसकी वजह से ऑब्वियसली जो मेरा फोकस होगा, जो मेरे एफर्ट्स होंगे वो डिवाइड हो जाएंगे। एंड जब आपके एफर्ट्स डिवाइड हो रहे हैं तो आपकी रिजल्ट्स भी डिवाइड होंगे, वो उतने कॉन्सेंट्रेटली आपको नहीं मिलेंगे जितना आप चाहते हो। एंड आई गेस बीइंग मीडियोकर, एक चीज़ जो आपके दिमाग में आती है ना, वो ये आती है कि मैं उम्र भर सब कुछ करता रहा, सबको संभालता रहा, सबकी डोरियाँ मेरे हाथ में थी, आई वाज ट्राइंग टू मैनेज एवरीथिंग एंड आई नेवर रीच वेयर आई वांटेड टू। एंड देयर इज दिस अनदर पर्सपेक्टिव वेयर किसी ने सब कुछ छोड़ दिया, ही चूज वन थिंग, ही पुट ऑल हिज अटेंशन एंड एफर्ट्स टू दैट ओनली वन थिंग, एंड उसकी वजह से, जबकि हम दोनों के पास इनिशियल लेवल पे कैपेसिटीज़ एंड क्वालिटी सेम थी, वो इंसान कुछ कर पाया और मैं नहीं कर पाया। तो मुझे लगता है कि इवन दो मुझे उस प्रोसेस में तब बहुत अच्छा लगा था जब मैंने फैमिली को टाइम दिया, या मैंने सोसाइटी को टाइम दिया, या मैंने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड किया, या मैंने ये कोशिश की कि मेरे एम्बिशियस होने की वजह से किसी और को कुछ कोई और हर्ट ना हो। फिर भी उस like because of this choices I'm right now like this, mediocre. Actually, let me ask you this. And even I'll just complete it कि maybe I'm okay with it, but मेरी जो पहुंच थी वो रुक गई, मैं वहां तक नहीं पहुंच पाया। तो मीडिया को होना शायद मेरे लिए, या जो लोग मेरे साथ थे जिनके लिए मैं काम करता था, उनके लिए वो ठीक है, बट एज अ पर्सन वेरी इंडिविजुअल मेरे लिए ये सही नहीं हुआ। और मुझे लगता है कि मोस्टली हम उस गिल्ट में या उस रॉन्ग चॉइसेस में जीते रहते हैं कि यार तब मैंने सब कुछ छोड़ दिया होता ना, तो आज मैं वो होता जो मैं अभी नहीं हूँ। तो आप इस थॉट को कैसे देखते हो, या फिर अगर मैं आज 4 चीज़ें चूज़ भी कर रही हूँ या फिर मैं सबको टाइम पे दे रही हूँ, how I'm going to be satisfied with somebody's achieving something and I'm not. ठीक है, देखो, again, and whatever I'm saying is my opinion and how I look at life, so I cannot say this for anyone else. Everyone might have different opinions, but the first thing is ki question that why are you even worrying about your parents or your family? Who's asked you to do that? Feel is because I get comfort when I have people around me, when I have family around me. They are the ones who support me, they are the ones who've brought me up, and they're always there behind me. They are the reason that I do not have a single tinge of fear in my life, irrespective of where I go. I have chosen them for my comfort. It's not that they have pulled me down. I think that is a perspective, one of the perspectives. The other is that when you say that you want to choose that ambition over everything else, go ahead, do it. Of course, achieve that. But then also look at examples that you have in front of you. Look at Steve Jobs. He was very unsatisfied. He said that okay, I've built everything, but what about it? I'm so ill physically. मैं डेथ बेड पे पड़ा हूँ, मेरा कोई है नहीं. I do not have a family who's here with me, who I can share my last moments with. What is it useful for? Right? So the parameters on which you gauge life, on which you value life, have to be very clear. And a lot of the times people don't realize the importance of these softer aspects that these emotions have, that people experience on a day-to-day basis, the small actions or experiences that you have, those instances that you enjoy with. It is important to cherish all those, because पैसा एक बार आ जाता है, फेम एक बार आ जाता है, it will die out very very soon. No one remembers who invented the mobile phone, no one remembers who invented the mic, no one remembers who invented the camera, right? But you're using it. अगर वो ये सोचे कि नहीं मैं नाम करके आता है, right, it'll be there for few years, but then it vanishes. So be careful of what you choose, and it is not wrong to choose one thing, but then you also have to accept all the other things that come along with it. That if you're choosing it, these are the things that you're letting go of. You cannot then go back and regret, because
that is a conscious decision that has been taken. So no one is stopping you. It is all your choice, that these are the things that you've set up around yourself. You can completely leave all of them and focus on one, or you can have little bits of these pieces, but everyone creates that world around them in the order of expectations that they have from their life, and that is why things are there. So I think the perspective that we need to gain is not that others are pulling us, it is that we have kept them within our reach because we want it. So the idea of not taking responsibility for things and putting it on others is what creates a lot of these uh, lack of expectations बोलो या फिर misconceptions बोलो या फिर dissatisfaction, whatever that is. So it's completely up to us.